Hello everyone, your Asha ma'am is here with the new exercise sheet solution, that is 3.1, exercise sheet number 3.1 of English 2, and our lesson is the enormous turnip. I have explained the lesson through the video now. Yes, so now I am going to explain the exercise sheet number 3.1, that is the enormous turnip. Okay, today we are going to learn about enormous turnips exercise sheet solution. Okay, as you know that here in that names corner you are going to write your name, then roll number and today's date. Okay, chalo, now let us start our solution of the exercise sheet number. Question number 1, choose the correct option. Okay, question 1 is how many characters are there in this story? Means there are how many characters in this story? In enormous turnip, at the beginning of the like explanation I have explained you now, there are mainly 4 characters. How many characters? 4 characters. So I am going to tick that. Okay, 4 characters. Okay, so what are they? कौन कौन थे वो? The old man, the old woman, the boy and the girl. Okay, so these 4 characters are there in this lesson. Okay, so the correct option is 4. Now question number 2, which seeds did the old man plant? मतलब ओल्ड मैन ने कौन सा प्लांट किया था, कौन से सीड्स को प्लांट किया था? Yes, you know that ना, that the turnip. Okay, option number A is potato, option number B tomato, option number C turnip and option number D onion. कौन सा सीड उन्होंने प्लांट किया था बेटा? टर्निप प्लांट किया था. Yes, that शलगम. Yes, I am going to tick that turnip. Now, what do you mean by enormous? Yes, that is also I have explained in the beginning of the class. Enormous का मतलब क्या होता है बेटा? Very big, small, tiny और smart. क्या होता है बेटा? Yes, so it is very big. तो I am ticked that. I have ticked that. Okay. Let us move to our question number 2. Write true or false. Now, question number 1. The old man planted some tomato seeds. देखो क्या लिखा है यहाँ पे? Tomato has been mentioned. तो वेदर ओल्ड मैन प्लांटेड टोमेटो सीड्स, टोमेटो की सीड्स प्लांट किए थे? नो. यस, ही हैज प्लांटेड टर्निप सीड्स. सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. आई एम गोइंग टू राइट फॉल्स हियर. FALSE, false. Okay, it's a false statement. Now question number 2, the old man was not able to pull up the enormous turnip. Yes, यहाँ पे लिखा was not able to, मतलब कि ओल्ड मैन अकेले वो टर्निप के सीड्स बाहर नहीं पुल कर पाया. तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट है ना, राइट है कि अकेले बहुत, इट वॉज एन सो इनॉर्मस, इट वॉज सो बिग दैट ओल्ड मैन कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप सिंगल हैंडेडली. वो मैम ने बताया था ना, अकेले तो वो नहीं निकाल पाया था. सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. TRUE, ट्रू. ओके, let us move to the question number 3. The boy did not help the old man and the old woman. यहाँ पे क्या बोला है बेटा कि ओल्ड मैन को बॉय ने, ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन को बॉय ने हेल्प नहीं की थी. देखो इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस. नॉट इज दैट डिड नॉट हेल्प द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन. तो बॉय ने तो हेल्प की थी ना बेटा. Yes, तो यहाँ पे तो ऐसा लिखा नहीं की थी, तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो आई एम गोइंग टू राइट फॉल्स. FALSE, फॉल्स. ओके, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. द ओल्ड मैन एट द इनॉर्मस टर्निप अलोन. देखो हियर वर्ड अलोन हैज बीन गिवन टू यू, मतलब कि ओल्ड मैन ने पूरा जो इनॉर्मस टर्निप था ना, इतना बड़ा टर्निप था, वो अकेले खा गया. तो डिड ही डू दैट? नो, ही like together, they all together ate up the enormous turnip. That is the old man, old woman, boy and girl सबने मिलके खाया था ना. तो यहाँ पे तो लिखा है alone खाया था. So it is also a false statement. F should be capital. FALSE, false. Okay, now let us move to question number 5. The girl also helped them to pull up the enormous tomato. Now read the question for carefully. हाँ, the girl also helped them to pull up the enormous tomato. तो टोमेटो निकाल रहे थे वो बाहर? No, they were trying to pull up the enormous turnip. तो here turnip should be there ना, but यहाँ पे तो दिया tomato. So it is a false statement. FALSE, false. Okay, so that is it. Now we are moving towards question number 3. Fill in the blanks with the help of the given box. Okay, question number 1. Once upon a time an old man dashed some turnip seeds. तो this is the first line of your lesson. क्या कर रहा था old man?
प्लांट कर रहा था टर्निप सीड्स को, तो आंसर विल बी प्लांटेड, PLANTED, planted. देखो in the box also planted has been given to you. Okay, चलो let us move to question number 2. The turnip seeds dash. Turnip seeds क्या कर रहे थे? Yes, the turnip seeds grew and grew, मतलब बड़े होते जा रहे थे. तो the answer will be grew and grew, GREW, grew and GREW, grew. Okay, so the turnip seeds grew and grew. Chalo, shall we move to question number 3? Yes. So question number 3 is the old man wanted to dash up the enormous turnip. Old man क्या करने की ट्राई कर रहा था? The old man wanted to pull, बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था ना, pull up the enormous turnip. So answer will be pull, PULL, pull. Okay, now question number 4. The old man and the old woman could not pull up the enormous dash. Enormous, what was enormous? Turnip. Yes, so here turnip will be the option. So the answer will be TURNIP, turnip. Okay, the answer will be TURNIP, turnip. Okay, now let us move to question number 5. All 4 of them at the dash turnip. So how was the turnip? The turnip was enormous. Yes, so the last answer will be enormous. So ENORMOUS. Okay, enormous turnip. ENORMOUS, enormous. Okay, now let us move to question number 4. Give the opposites of the following. Okay, what is the opposite of old? ओल्ड का ऑपोजिट क्या होता है बेटा? ओके, इट इज वेरी इजी. द ऑपोजिट ऑफ ओल्ड इज न्यू, NEW. ओके, इवन यंग इज ऑल्सो देयर, क्योंकि ओल्ड का मतलब बूढ़ा होता है, तो न्यू का न्यू मीन्स नया, और ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है. 2 मीनिंग्स आर देयर ऑफ ओल्ड. वन इज लाइक वेरी ओल्ड, और जिसका हम लोग बोलते बहुत पुराना हो गया, और वन इज वेरी जो बहुत बूढ़ा होता है. तो न्यू एंड यंग बोथ आर द ऑप्शन, बट मैम हैज रिटन ओनली न्यू हियर. ठीक है. नाउ पुल, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ पुल? पुश, PUSH, है ना. Yes, you have seen this word whenever you are entering into the shop or any room ना, 2 things will be written there. One is pull and one is push. ओके, पुल का मतलब खींचना और पुश का मतलब धक्का देना. चलो, नाउ इनॉर्मस. इनॉर्मस मतलब वेरी बिग. तो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ बिग? ठीक है, तो ऑपोजिट ऑफ बिग इज टाइनी, TINY, टाइनी. ओके, TINY, टाइनी. ओके, सो दैट इज द ऑपोजिट ऑफ enormous, that is enormous opposite is tiny. Now what is opposite of grow? Grow का मतलब बड़ा होना. तो जो grow चीज नहीं होती है, that will be called as shrink, 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 SHRINK. Okay, SHRINK, shrink. Shrink means the things which does not grow. जो चीज grow नहीं होती है, that will be called as shrink. Now we are moving towards our question number 5, that is make sentences by using the words. Okay, ये exercise हम बहुत बार कर चुके हैं. यहाँ पे क्या करना है बेटा? You have to make the sentences by using these given words. Okay, so now build a sentence or make a sentence by using enormous in the sentence. Okay, enormous का मतलब होता है very big. तो that way we can write the sentence. हम इस तरह से sentence लिख सकते हैं like the elephant is an enormous animal. You know that ना, elephant is very big. हाँ, तो the same we can write it also like the elephant is an enormous animal, and as it is a statement, we are going to add full stop at the end. Okay, the elephant is an enormous animal. Okay, now let us move to the question number 2, pulled.
ओके, पुल्ड का मतलब धक्का देना या फिर बाहर तरफ खींचना. सो शी पुल्ड द सूटकेस आउट, मतलब उसने अपना सूटकेस बाहर खींचा. तो एस शुड बी कैपिटल हियर. शी pulled the suitcase, SUITCASE, suitcase out. Okay, chalo. Now full stop will be there at the end. Okay, now you have to make the sentence by using grow. The plants need water to grow, है ना? Yes, the plants need water to grow, and full stop. Okay, the plants need water to grow. Now let us move to the next question. Question number 4, planted. So we all planted vegetables in our kitchen garden. ये मैम ने बनाया है. You can make another also. We all planted vegetables in our kitchen गार्डन. वी ऑल प्लांटेड वेजिटेबल्स इन अवर किचन गार्डन. हमने हमारे किचन के गार्डन में वेजिटेबल्स प्लांट किए हैं. नाउ हेल्प. तो हेल्प का क्या होगा बेटा? वी शुड हेल्प द नीडी पीपल. जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको हमको हेल्प करनी चाहिए. तो वी शुड हेल्प द नीडी people. Okay, that is the answer, and the full stop will be there at the end. वो भूलना नहीं है बेटा. ओके, फुल स्टॉप हमको लास्ट में जैसे मैम ने लगाया ना, आपको भी लगाना है. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हु प्लांटेड द टर्निप सीड्स? टर्निप सीड्स को किसने प्लांट किया था? यस, एन ओल्ड मैन प्लांटेड द टर्निप सीड्स. तो यहाँ पे एन ओल्ड मैन planted the turnip सीड्स. देखो बेटा यहाँ पे है ना, द स्पेस विल बी देयर. मैम ने गलती से साथ में लिख दिया है, बट हियर द स्पेस विल बी देयर. ओल्ड एंड मैन. ओके, द ओल्ड मैन प्लांटेड द टर्निप सीड्स. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. हु वॉज द सेकेंड पर्सन हु केम फॉर द हेल्प? कौन आया था बाद में? सेकेंड में कौन आया था? Old woman. Yes, so an old woman you have to add in place of who, and then you have to repeat the question. Okay, so यहाँ पे आएगा क्या बेटा? An old woman, then you have to repeat the answer. Was the second person who came for the help. Was the second person who came for the help. Okay, and the full stop will be there. An old woman was the second person who came for the help. Now let us move to the third. Who all were able to pull up the enormous turnip? किन लोगों ने साथ में मिलकर इनोरमस टर्निप बाहर निकाला था? तो ऑल फोर. द नेम यू हैव टू गिवन, बट दिस टाइम एज वी आर स्पेसिफाइंग द नेम्स, देन द आर्टिकल द विल कम. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन. ठीक है, देन कॉमा, द ओल्ड वुमेन, then the comma, the boy and the girl. Okay, फिर you have to repeat the question. who की place में हमने आंसर लिख दिया, then you have to repeat the question like were able to pull up the
enormous turnip and full stop. Okay, this way you have to write the old man, the space will be there. Okay, यहाँ पे मैम ने गलती से space नहीं दी है, but you have to give the space while writing in the notebook. Okay, the old man and the old woman comma the boy and the girl were able to pull up the enormous turnip. Okay, this way you have to give the answer. Now let us move to the last question. What did they do with the turnip? टर्निप का उन्होंने क्या किया? तो दे ऑल एट अप द इनॉर्मस टर्निप टुगेदर, सबने साथ में ये टर्निप खा लिया था ना. यस, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? दे ऑल एट अप द इनॉर्मस turnip together and full stop will be there. They all ate up the enormous turnip together. सबने साथ में मिलके enormous turnip खा लिया था. Okay, so that was the solution of the exercise sheet number 3.1, that is enormous turnip. You have to write the whole exercise sheet with along with the questions into your notebook as a homework. Homework में लिखना है आप सबको. Okay, in the next session I'll ask for the homework. Okay, you know that now, that if the examination will not be there, then on the basis of your notebooks or on the basis of your test marks, we are going to prepare the mark sheets. So don't forget that beta, homework is very much necessary. Anytime I can ask to submit your notebooks, cursive writing books or your that project book, that is scrap book, to the school हो, मैं कहीं कभी भी मांग लूँगी आपको. And that time you have to be completed with your homework. Okay, चलो, I hope that you are doing your homework regularly. Okay, now your ma'am is saying bye to you. Your ma'am is signing off beta. Bye bye.